Hello and welcome you all in Study Durbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with the new topic that is for current affair 47th G7 summit which was just now इस साल अभी 4-5 दिन पहले हुआ है. कहाँ पर? In London. So 47th G7 summit, it is the topic which is related to international affairs, IR or international summit in India. UK currently holds the presidency of G7. G7 की प्रेसिडेंसी अभी किसके हाथ में? यूके, यूनाइटेड किंगडम्स, एंड हैज़ इनवाइटेड इंडिया अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका. इन 3 देशों को उसने अलग से बुलाया. दीज 3 कंट्रीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द G7 बट स्टिल दे हैव बीन इन्वाइटेड एज गेस्ट कंट्रीज फॉर G7 समिट. थीम जो इस साल का था, इट वॉज बिल्ड बैक बेटर. बेसिकली ये बिल्ड बैक बेटर से मतलब है कोरोना जो पेंडेमिक था उससे जो भी चीज़ें हुई हैं उससे वापस से रिकवरी हो. एंड यूके हैज़ आउटलाइंड 4 प्रायोरिटीज़ एरिया फॉर इट्स प्रेसिडेंसी. उन्होंने 4 कुछ प्रायोरिटी एरिया सामने रखे हैं. तो 4 पॉइंट्स क्या है? लीडिंग द ग्लोबल रिकवरी फ्रॉम कोरोना वायरस वाइल स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस अगेंस्ट फ्यूचर पेंडेमिक्स. कोरोना वायरस से जल्द रिकवरी हो और खुद को इतना स्ट्रेंथ करें कि आने वाले समय पे अगर कोई दूसरी पेंडेमिक आए तो उससे हम कैसे बचें. प्रमोटिंग फ्यूचर प्रोस्पेरिटी बाय चैंपियनिंग फ्री एंड फेयर ट्रेड. बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग, प्रमोट कर रहे हैं फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड बातें. कैसे? कि हम कैंपेनिंग करें जिसमें फ्री और फेयर ट्रेड हो पाए, देशों में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट फ्रीली और बहुत अच्छे से हो पाए. टैकलिंग climate change and preserving the planet biodiversity. At the same time, we should tackle with the climate change and preserve our biodiversity so that our planet should be preserved. Next, campaigning shared values and open societies. So these were the basic points. Leading the global recovery from coronavirus while strengthening resilience, that we have discussed all the 4 points. Now, during the session, Prime Minister Modi, what he have said, expressed appreciation फॉर द सपोर्ट एक्सटेंडेड बाय द G7 ने उन पर जो सपोर्ट किया उसके बारे में उन्होंने अप्रिशिएशन किया. एंड अदर गेस्ट कंट्रीज ड्यूरिंग द रिसेंट वेव ऑफ कोविड इन्फेक्शंस इन इंडिया. इंडिया में जो कोविड इन्फेक्शन हुआ उससे जो बाकी के देश स्पेशली G7 कंट्रीज़ ने जो हमें हेल्प किया उसके लिए उन्होंने अप्रिशिएशन एक्सप्रेस किया. हाईलाइटेड इंडियाज होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच टू फाइट द पेंडेमिक, सिनर्जाइजिंग the efforts of all the level of the government, industry and civil societies. Next, he also explained India's successful use of open source digital tools for contact tracing and vaccine management. उन्होंने अपने देश का जो सक्सेसफुल ओपन सोर्स डिजिटल टूल जो हमने यूज़ किया, जैसे कोविन जो हमारा कोविन पोर्टल बना, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुआ. दुनिया के कई सारे देशों ने भी उसको अप्रिशिएट किया और अपने देश में लागू करने के लिए बात की. Conveyed India's willingness to share its experience and expertise with other developing countries. Committed India's support for collective endeavor to improve global health governance. Next, sought the G7's support for the proposals moved at the WTO, that is World Trade Organization, by India and South Africa for the TRIPS waiver on COVID-related technologies. Next, calling for global unity, leadership and solidarity to prevent future pandemic. What they are saying कि global unity, leadership and solidarity, ये किस लिए? तीनों चीज़ें एक साथ मिलें जिससे हम फ्यूचर में कोई नई पेंडेमिक आए तो उससे हम बच के रहें और बच सकें. He emphasized the special responsibility of democratic and transparent society in this regard. Recalled that democracy and freedom were a part of India's civilization ethos. मतलब इंडिया की जो सिविलाइजेशन है उसका एथिक्स जो है स्टार्टिंग से ही क्या रहा? डेमोक्रेसी और फ्रीडम दोनों साथ में. He shared the concern expressed by several leaders that open society are particularly vulnerable to disinformation and cyber attacks, and stressed the need to ensure that cyberspace remains an avenue for advancing democratic values and not of subverting it. Next, what he highlighting the non-democratic and unequal nature of global governance institute. PM called for the reform of the multilateral system as the best signal of commitment to cause of open society. The leaders adopted the open society statement at the end of the meeting. What
our Prime Minister has suggested to them to appoint or to adopt open system, open society statement and open system. So all the G7 countries have also ended or have also adopted the same thing which our leader has said to them, highlighted that the planet's atmosphere, biodiversity and ocean cannot be protected by countries acting in silos, and called for collective action on climate change. Means आप बात कर रहे हैं कि अगर प्लैनेट को बचाना है, प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, एटमॉस्फेयर को सेव करके रखना है, ओशियंस को बचाना है, तो सिर्फ एक कंट्री से या G7 समिट की 7 कंट्री से मिलकर सिर्फ नहीं होगा, हमें पूरे के पूरे देश कलेक्टिवली एक साथ काम करना होगा टू सेव और क्लाइमेट चेंज को रोक पाएं. स्पीकिंग अबाउट इंडियाज unwavering commitment to climate action, he mentioned the commitment by Indian Railway to achieve net zero emission by 2030. What he said कि उन्होंने emission जो हमारे यहाँ से pollution का हो रहा है, उन्होंने कह दिया by 2030 हमारे यहाँ से net zero emission होगा. He stressed that India is the only G20 country, हमारी country G20 group of 20 countries, G20 countries, group of 7 countries, G7 में हमें बुलाया है as a guest. So he stressed that India is the only G20 country on track to meet its Paris commitments. Fine, Paris commitments means Paris में जो commitment उन्होंने किया था Paris meeting में, for that. He also took note of the increasing effectiveness of 2 major global initiatives nurtured by India, that is the CDRI and the International Solar Alliance. Prime Minister stressed that developing countries need better access to climate finance. डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको बेटर फाइनेंस दिया जाए, एंड कॉल्ड फॉर अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज दैट covers all dimensions of the problem: mitigation, adaptation, technology transfer, climate financing, equity, climate justice and lifestyle. So this is all about the topic, that is G7 summit, in which our country, that is Prime Minister Mr. Narendra Damodar Das Modi, has been invited by the G7 committee, that is by the UK. In that committee what he expressed the views, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर किया है. इसमें कोई भी डाउट होता है आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं. एंड इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, और अलग से कोई टॉपिक में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.